Okay, good morning, student friends. Welcome back to today's lecture. Today we are going to discuss remaining part of addressing modes of 8086 microprocessor. Before I move further, let me recap what we have discussed yesterday. So yesterday we started with the definition of program, what the program is all about, and then we discuss what is the instruction, and then we discuss what are the computer languages. Okay, high level language, low level language. We talked about machine language, assembly language. Okay, and then we started discussing addressing modes. There are, as I mentioned you yesterday, there are 12 different addressing modes, and that those 12 addressing modes. Kindly mute yourself now. These 12 addressing modes have been categorized into 5 different groups. Okay, and yesterday we started discussing. We discussed register addressing modes. We have also discussed immediate addressing mode. Similarly, we talked about how this logical address can be converted into physical address. And then we discussed direct addressing. We have also discussed register indirect addressing. We talked about BX BP register, how this BX BP register are going to play important role in base addressing. And similarly, how these SIDI2 index registers are being used in index addressing. And then this BX plus SI, I mean base register and index register are being used for addressing modes. So far yesterday we have discussed 7 different addressing modes. Okay, so 5 remaining we are going to discuss today, and then we will have again we'll have question answer in between, and then we will move to next chapter. Okay, so this is the new string addressing mode. Yesterday we talked about, as I mentioned earlier, first 7. Today we are going to discuss remaining 5. String addressing mode. This addressing mode employed in string operation to operate on string data. Okay. Now, as I mentioned yesterday, whenever we are talking about addressing mode, at this moment of time, we are not that much focused on the what is happening. I mean, the interpretation of instruction particularly. Okay, because since we cannot discuss, or I cannot make you understood these register, I mean any addressing mode without quoting example. Okay, that is the reason why I am quoting examples. Otherwise, uh, uh, we need not refer any examples here, instructions here. But without quoting instructions, I will not be able to tell you the details of these addressing modes, right? And therefore we are referring those instructions. But let me tell you, we are going to discuss this instruction in detail later on. Okay, while going through instruction set, we are going to discuss these instructions later on. So therefore I will not be illustrating those instructions more, but my focus would be how data is being provided. Because as I told you yesterday, addressing modes means what? It is a method or technique by which data or memory address going to be provided to the microprocessor for execution of particular instruction. So these methods are nothing but addressing modes, right? And therefore here, while talking about different addressing mode, I will be focusing on how what kind of method we are employing to provide data or provide the memory location of the data. Okay, this is only my focus is going to be, and for that purpose only I will be referring instructions. Okay, so in this string addressing mode, effective address EA of source data is stored at SI register, and effective address of destination data is stored at DI register. Now, what is happening here in whenever we are talking about MOVS byte, it means that we are talking about MOV stands for move, transfer of data, and A stands for it is string related instruction, because we have discussed yesterday MOV AL comma BL. That instruction was something different. This is MOVS. Whenever we are talking about MOVS, it means this is string related instruction. And byte means what? MOVS byte means what? It means essentially this instruction will transfer
one byte of information from one memory location to another memory location. So it means from source to destination. So who is going to provide source? Source is going to be provided by SI register, and destination memory is going to be provided by DI. Okay, so SI and DI. That is why it is called as source index, and DI stands for destination index. So effective address of source data is stored in SI register. Effective address of destination data is going to be stored. I mean destination rather, not data. So the destination is stored in DI register. Now, I told you yesterday and day before yesterday as well. Effective data is going to be effective address. I mean, effective address is going to be stored either in SI or DI. But whenever we are talking about physical address, we need base address. So base address is going to be stored at DS and ES respectively. Whenever we are talking about source location, at that time the base address would be at DS. Whenever we are talking about destination location, the base address would be in ES. Okay, and this is how the calculation of memory location is going to be. For source location, as I told you earlier, the effective address would be in SI. Okay, and where your base address would be? Base address would be in data segment, and we have to multiply it by 10. Okay, and therefore then this memory address means physical address would be this BA plus EA. So this we have already discussed yesterday, right? Similarly, for this is the calculation for destination memory location. So only difference would be now instead of SI, effective address would be in DI, and base address would be in extra segment, not in data segment. Okay, and this is how calculation is going to be. And then that, I mean, source memory to destination memory, 1 byte of information going to be transferred. Why it is called string addressing? Because here the string of data from one memory location to another memory location we are transferring, and that is why it is called as a string addressing mode. Okay, now let us go to next, direct IO port addressing and indirect IO port addressing. These addressing modes are used to access data from standard IO map devices or ports. Because so far we were talking about accessing data from memory. Because I told you, if you remember the block diagram of microcomputer, you have a CPU unit, input device, output device, and CPU. Okay, but if you look at the more detailed diagram, because this is going to be a very generalized diagram, you have input device, output device, and right in the middle you have CPU. But if you look at the more detailed diagram of microcomputer, apart from CPU, you will be having semiconductor memory. Okay, this is the memory which we are talking about. So this semiconductor memory will be used to hold the program. Okay, so whenever you are feeding program to any device or microcomputer system, that program goes to the RAM memory of the internal RAM memory, which is outside the processor, not inside the processor, outside the processor, right? So far, right from serial number 1 to serial number 8, whatever the data we are providing, whatever the memory location we were talking about, these memory location and data, we were talking about the memory location only. I mean the whatever data which is required for execution. So far from 1 to 8 addressing mode, we were talking about data from memory. I mean the collection of data from memory for processing, and process data used to, you can send it to memory again. But we know whenever we are talking about any computer system, we can take data from memory or data from input device. Similarly, the process data can be sent to memory or it can send to output device. So we need to know what kind of techniques which are being used to receive data from input device, similarly to transfer data to the output device. These two addressing modes, direct IO port addressing and indirect IO port addressing, essentially deals with the collection of receiving of data from input device and transfer of process data to the output device. Therefore, this is being written here. These addressing modes are used to access data from standard IO map devices or ports. In direct port addressing mode, 8-bit port address is directly specified in the instruction. There are two. As far as IO port addressing is concerned, there are two port addressing. One is direct IO port addressing, other is indirect IO port addressing. In direct port addressing mode,
8-bit port address is directly specified in the instruction. You can see this is, for example, INAL, 09H. So what this 09H is, because this is enclosed in square bracket. The meaning, because if you don't enclose in square bracket, it will be considered as a data, but this is not data. This is the address of the input device. Address of input device. The meaning of this instruction is the data from the input device whose address is 09 will be transferred to accumulator, that is AL, and that is why this in means receiving data from input device to the processor. Okay, so the data from the input device whose address is 09 will be loaded into accumulator. So you can see operation here, 09 is the address of port. The content of that would be transferred to AL. Content of port with address 09H is moved to AL, means transferred to AL. So this is the example of direct port addressing. This is the example of direct port addressing. Similarly, you can have out instruction, because as I mentioned earlier, क्योंकि हमें यहाँ पर instruction समझाना ही नहीं मुझे आपको, इसलिए I am not focusing on instruction. Rather, we are focusing on addressing. Data कहाँ से ले रहे हैं अभी? जैसे कि पहले जो examples मैंने दिए थे, जैसे for example ये देखिए, ये जो data जो है, forget about this. I will give you. You can see this MOVDL or MOVCLDH. ये data कहाँ पर है? This is in the memory. Okay, this is within the processor and this is outside the processor. This 08 is outside the processor and this is within the processor. AL, DL, all these are memory locations within the processor, which are labeled as various register AL, AH, BL, sorry, AH, AL, BH, BL, CS, CL, DH, DL, and so on and so forth, right? So we are providing data from memory in case of all those first 7 addressing modes. As far as this direct IO port addressing is concerned, we are taking data from input device or we are sending data to output device, process data. So whenever you want to take data from input device, you can write this instruction in AL, 09H. And whenever you want to transfer process data to output device, then it would be out. The format would be out. Here the port address, AL, because this is always a source and this is always destination. You need to remember the keyword IN is a keyword, or we can call it as a mnemonics. Okay, IN is mnemonics in case of in and out instruction. AL is destination and this is source. Okay, now if you want to transfer data to port, then here it would be mnemonics would be out. Then the port address, let us say 09, L. It means the content of AL will be transferred to the port whose address is 09. Okay, whereas this instruction is being used to receive data from the port whose address is 09. Okay, it means here we are receiving data from the port whose address is 09. That data will be transferred to accumulator. Okay, so this is what we call as, this is the example of direct IO port addressing. Okay, now in indirect port addressing, what is happening here? This is example of indirect port addressing. In indirect port addressing, the instruction will specify the name of register which hold the port address. Okay, so in direct port addressing, port address जो है वो लिखा हुआ है आपके इंस्ट्रक्शन में, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अभी out dx, ax, क्योंकि यहाँ पर in एग्जाम्पल लिया, अभी यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट के लिए out का एग्जाम्पल लिया. Fully speaking, in and out दोनों एग्जाम्पल हम डायरेक्ट पोर्ट एड्रेसिंग में भी ले सकते हैं और इनडायरेक्ट में भी ले सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड आपको डाइवर्सिटी, रादर फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी, हियर I have quoted in instruction for direct port addressing and out instruction for indirect port addressing. तो indirect port addressing में क्या होगा, ये जो direct port address है वो लिखा नहीं होगा. Here rather the instruction will specify the name of register. Instruction will specify name of register which holds the port address. आप देखिए यहाँ पर ये instruction, इसमें name of register है dx, इस dx में port address रखा हुआ है. Okay, in 86 16-bit port address is stored in register dx. अब यहाँ पर क्या है, out square bracket dx, ax. इसका मतलब ये है कि content of ax would be transferred to the port address whose address is stored in register dx. Okay, अब देखिए कितना डिफरेंस है. ये इनडायरेक्ट क्यों कहा इसको,
क्योंकि पोर्ट एड्रेस डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। पोर्ट एड्रेस जो है इसमें DX रजिस्टर में स्टोर किया हुआ है। मीनिंग इज कंटेंट ऑफ AX would be transferred to port whose address is stored in DX, and that is why it is indirect port addressing. Okay. Now this is all about direct port addressing and indirect IO port addressing. Now let us talk about relative addressing. Okay. Now what do you mean by relative addressing? In this addressing mode, the effective address of the program instruction is specified relative to instruction pointer by an 8-bit sign displacement. Now relative का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए हम किसी को कहते हैं कि अगर मान लो मेरा कोई कजिन है तो I will always call him as a relative. Okay. लेकिन मेरे क्लास में मान लो there are 100 number of student आपके क्लास में. Okay. उसमें कोई आपका रिलेटिव हो सकता है. रिलेटिव का मतलब क्या होगा? कजिन होगा, राइट? या मतलब आपके अंकल का बेटा या मौसी का बेटा. Okay, something of that sort, right? So why we are calling as relative? Because they are that fellow is going to be, you know, related to you. That fellow is going to be related to you. So that relation will provide you how far he is. That relation would be providing you, gives you how far he is, right? जैसे कि आप देखिए, now for example, the son of your uncle, okay, daughter of your uncle, the close relation. लेकिन दूर का होगा. आप जैसे कह सकते कि he is, I mean मेरे दूर के अंकल का बेटा है, right? It means that relation is little bit away, so you will be always in the reference point. You will be always reference point. और आपसे फिर वो कितने दूर है, that will decide the relations, right? And that is why it is called relative. Here relative यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है? Specified relative to instruction pointer. उसका reason क्या है? Whenever we are talking about execution of program, whenever we are talking about execution of program, जैसे पहले ही मैंने बताया कि what is program? Program is set of instruction. Program is set of instruction which is being used for completion of one particular task. इसका मतलब program में एक से ज्यादा instructions होंगे. Now what is role of IP? Role of IP is to keep the track of program execution. Role of IP is to keep a track of program execution. मतलब क्या है? जैसे कि देखिए, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कि मैं आपका टीचर हूँ and I ask you to go to Aurangpura and bring something. Okay, this is one task I have given. I ask you to go to Aurangpura and bring one book from one bookstore, right? This is the task I have given. So you have to execute. तो execute करते समय आप क्या करेंगे? You will start from department and then you can hire the bus or you can hire taxi and go to Aurangpura, right? Locate that particular book stall. Then you will purchase a book, and then once the book is purchased, again you will hire taxi or bus, and then you will come back to university and then you will hand over that book to me. So this is the entire flow chart, right? ये होगा आपका flow chart. मतलब आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के बाहर निकलोगे, either बस हायर करोगे मतलब you will be riding either bus or you will hire auto और टैक्सी. देन आप जाएंगे, अब देखिए जाएंगे, किताब परचेस करोगे, किताब परचेस करने के बाद वापस आओगे. अब ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट में मान लो आप यहाँ से तो निकल गए, औरंगपुरा में गए, लेकिन औरंगपुरा में किताब वगैरह परचेस किया, लेकिन बाद में भूल गए आपको क्या करना है. तो देन आई मीन यू आर लॉस्ट, राइट? तो क्या होगा? इसका मतलब यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द प्रोग्राम. तो आप भूलते नहीं, लेकिन आप वापस ही क्यों यूनिवर्सिटी आते? आप हॉस्टल में जाके सोते क्यों नहीं? क्योंकि हॉस्टल इज आल्सो यूर लेट अस से आप हॉस्टल में रहते हो, मैंने कुछ काम आपको बताया किताब लाने का, तो आप मेरे पास ही क्यों आएंगे? आप वहां से सीधा हॉस्टल जाकर सो क्यों नहीं जाते? रीजन ये है कि आपके मेमोरी में वो पूरा लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या करना है. आपके अलग अलग लोकेशंस पे लिखा हुआ है कि पहला लोकेशन पे लिखा है कि चलो डिपार्टमेंट के बाहर जाओ, सेकंड लोकेशन लिखा है कि चलो टैक्सी हायर करो, थर्ड लोकेशन में लिखा है कि चलो अभी औरंगपुरा में वो शॉप लोकेट करो, देन नेक्स्ट लोकेशन में लिखा हुआ है कि वो किताब परचेस करो, नेक्स्ट लोकेशन लिखा है कि यस रिटर्न बैक, अगेन हायर द टैक्सी, नेक्स्ट. मतलब ये जो हर मेमोरी लोकेशन में आप जो है ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं. इसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, पूरे टास्क में अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, राइट? वैसे ही माइक्रोप्रोसेसर जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो हमें क्या करना पड़ता है? अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे, जैसे कि 10 इंस्ट्रक्शंस है एक प्रोग्राम में, तो वी आर गोइंग टू यूज 10 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर दैट प्रोग्राम. तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? पहले
ये पहला मेमोरी लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, देन सेकंड मेमोरी लोकेशन विल बी एग्जीक्यूटेड, थर्ड मेमोरी लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। जैसे 10 लोकेशन पे मान लो मेरे पास 10 इंस्ट्रक्शंस है, तो क्या होगा, माय प्रोग्राम विल बी stored at 10 different locations and each and every location मुझे देखना है। अब ये कौन माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा कि चलो इसके बाद में सेकंड ही जाना है, आपको इंक्रीमेंट ही करना है, पीछे नहीं जाना है, क्योंकि वो तो मशीन है। हमें पता होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज गोइंग टू डू दैट रोल। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बताएगा माइक्रो प्रोसेसर को चलो आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। That is why we said instruction pointer is being used to keep a track of program execution. इसका मतलब क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका मेमोरी लोकेशन जो है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। इट मींस लाइक फॉर एग्जांपल 1000, तो पहला मेरा एक प्रोग्राम है 1000 से 1005, 1000 लोकेशन पे 5 इंस्ट्रक्शंस है, 5-6 इंस्ट्रक्शन। 1000 पे पहला इंस्ट्रक्शन है, 1001 पे दूसरा है, 1002 पे तीसरा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर को बताना पड़ेगा कि यू शुड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम फॉर 1000 लोकेशन, एंड देन so whenever I press execute key, automatically that first memory location is going to be loaded into the IP। क्योंकि आपका भी प्रैक्टिकल शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब प्रैक्टिकल शुरू होगा आपको पता चलेगा कि यू आर गोइंग टू, whenever you are following that typical procedure for execution a program, you will have to enter starting address before you press execution key, you will have to enter starting address of your program। ओके तो जब आप स्टार्टिंग एड्रेस एंटर करोगे एंड देन एग्जीक्यूट की प्रेस करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा दैट विल बी लोडेड इनटू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, and then every time instruction pointer is going to be executed by one। लेकिन जैसे कि आप देखिए कि 5-6 इंस्ट्रक्शन है, उसमें एक इंस्ट्रक्शन है JZ मीनिंग ऑफ JZ इज जंप इफ 0 to 0AH। ओके, जंप इफ 0 to 0AH, इसका मतलब क्या है, मुझे इतने जंप्स लेने हैं, जैसे कि 0A का मतलब क्या होता है 10, 0A का मतलब 10, बिकॉज़ 9 के बाद में 10 हेक्साडेसिमल में, इसका मतलब ये है कि मुझे 10 इंस्ट्रक्शन स्किप करने हैं। क्योंकि मैंने फिर से आपको बताता हूं कि whenever we are executing program, the program is going to be executed sequentially। ओके तो sequentially जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा इंस्ट्रक्शन हुआ, तीसरा इंस्ट्रक्शन हुआ, और वहां पर आया जंप, तो कितना जंप करना है, वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय दिस इंस्ट्रक्शन। दैट इज व्हाई इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग, मतलब कितना जंप करना है आपको, वो एड्रेस प्रोवाइड करेगा JZ0A। अब इसको कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब देखिए ऑपरेशंस को उसको साइन एक्सटेंड करना पड़ेगा, 0A को 00A। सो इफ JZ मींस क्या, इफ ZF is 1 then effective address would be IP plus 00A। मतलब क्या होगा, आपका जो IP होगा उसमें क्या, IP का जो प्रेजेंट लोकेशन होगा उसमें 00A ऐड होगा, सो दैट वुड बी योर इफेक्टिव एड्रेस। एंड देन ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन आपको मैंने पहले ही बताया, ये कब होगा, जब ZF इक्वल टू 1। फिर से मैं बताता हूँ ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग, अभी फिलहाल ज्यादा आप टेंशन मत लो, okay, because later on we are going to discuss। So relative addressing means we will be providing processor how much steps to be skipped। Okay, this is what we call as relative addressing। And then last one is implied addressing। Implied addressing में क्या है, in implied addressing instructions using this mode have no operands as far as that is why it is called implied। implied मतलब क्या है, किसके ऊपर काम करना है, मतलब अब जैसे कि आप देखिए इंस्ट्रक्शन यूजिंग दिस मोड हैव नो ऑपरेंड्स, ऑपरेंड ही नहीं है, the instruction itself will specify data to be operated by the instruction। okay, अब CLC का मतलब क्या है, clear the carry flag। okay, जैसे कि पहले इंस्ट्रक्शन अब हमने बताया, जैसे कि देखिए MOV DX, मतलब यहाँ पर DX plus SI plus 0 मतलब कहाँ से डेटा लेकर जाना है, कहाँ लेकर जाना, मतलब कहाँ से लेना है, कहाँ लेकर जाना है। okay, this has been provided in the instruction। ओके लेकिन इसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, ओनली सीएलसी मींस क्लियर कैरी फ्लैग। क्लियर कैरी फ्लैग का मतलब ये होता है कि आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वी आर हैविंग 6 कंडीशनल फ्लैग और स्टेटस फ्लैग, तो कैरी फ्लैग इज वन ऑफ द कंडीशनल फ्लैग। सो व्हेनेवर यू आर executing CLC instruction, automatically the status of carry flag is going to be
clear means it will set to 0. It will set to 0. This kind of addressing is called as implied addressing, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑपरेंड दिया नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई डेटा अलग से दिया नहीं है, but this is by default. CLC itself, it is going to be operated on a carry flag only, nothing else. So this is what the addressing modes is all about. Let me quickly recap what we have discussed today, because we started with string operation, string addressing mode is, and one of the example of string addressing mode is MOVS byte. So this instruction is being used to transfer string from one location to another location, source to destination. So source कैसे निकालेंगे? SI is going to provide the source memory location and DI is going to provide the destination memory location. Okay. So physical address जैसे मैंने बताया कि this SI and DI will have effective address. Base address would be there in DS and ES respectively, and accordingly this calculation would be performed. This is what we call as string addressing. IO port addressing, there are two different kinds of IO port addressing: direct IO port addressing and indirect IO port addressing. Direct IO port addressing में क्या होता है, जो एड्रेस जो है IO डिवाइस का, वो दैट इज डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. अब देखिए 09 यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, जिस इनपुट डिवाइस से डेटा लेना है उसका एड्रेस डायरेक्टली दिया हुआ है, या जिस आउटपुट डिवाइस पर हमें डेटा भेजना है उसका एड्रेस क्या होगा, डायरेक्टली दिया होगा. बट इनडायरेक्टली में डिफरेंट होगा. इवन इनडायरेक्ट में क्या है कि पोर्ट एड्रेस इज नॉट डायरेक्टली गिवन, इट इज स्टोर्ड इन सम रजिस्टर. फॉर एग्जांपल आउट स्क्वायर ब्रैकेट dx, ax. इसका मतलब क्या होता है कि कंटेंट ऑफ ax वुड बी ट्रांसफर्ड टू द पोर्ट whose address is stored in dx. इसका मतलब क्या है, पोर्ट एड्रेस को हमने dx में इनडायरेक्टली स्टोर कर रखा है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट पोर्ट एड्रेसिंग. एंड देन रिलेटिव एड्रेसिंग, जैसे मैंने बताया कि रिलेटिव एड्रेसिंग में एसेंशियली हमें क्या बताते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग में हाउ मच स्टेप्स टू बी स्किप्ड. ओके, रिलेटिव एड्रेसिंग में हाउ मच स्टेप्स टू बी, यूजुअली जब दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन. मतलब यूजुअली जो है प्रोग्राम जो है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होता है. 10 इंस्ट्रक्शन अगर है, पहला इंस्ट्रक्शन होगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन होगा, तीसरा इंस्ट्रक्शन होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, सो ऑन सो फोर्थ. अगर मेरे पास 100 लाइन का प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल 100 लाइन का, उसमें एक भी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ऑल इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली. बट इफ यू आर हैविंग relative addressing instructions like JZ08, okay, there are many instructions, but this is only one example has been quoted here. JZ08 मतलब क्या है, जीरो फ्लैग अगर सेट है, जंप इफ जीरो फ्लैग इज सेट. JZ का मतलब क्या है, जंप इफ जीरो फ्लैग इज सेट. तो जीरो फ्लैग अगर सेट है तो कितने जंप, मतलब जंप कहां पर लेनी है, जंप लेनी है मतलब कैसा है कि कितने स्टेप्स को हमें स्किप करना है, वो छोड़कर यहाँ से यहाँ के बजाय सीधा नीचे जाएगा. तो वो कितना नीचे जाना है, दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय दिस एड्रेस. तो उसको कैसे निकालना, कैसे है, हमारा इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलेगा, स्टेटस ऑफ आईपी प्लस ये जो नंबर दिया हुआ है 0008, दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव एड्रेस. एंड दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस, जो मैंने पहले बताया आपको. फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर दे, BA बेस एड्रेस वुड बी इन CS, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोड मेमोरी, राइट. सो यहाँ पर अभी क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते समय बेस एड्रेस होगा CS में, it is to be multiplied by 10, and then the physical address would be BA plus EA, and this is how this is going to be decide that how many steps to be skipped. skip मतलब कितने स्टेप छोड़ के, कितने इंस्ट्रक्शन को स्किप करते हुए आगे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को हमें लेकर जाना है. So this is how this relative addressing mode is all about. And you can see यहाँ पर लिखा है, if ZF equal to 1, then program control jumps to new address. If ZF equal to 0, तो वो jump नहीं करेगा, क्योंकि in that case क्या होगा, it will go to next instruction. तो JZ का मतलब ये है कि if the condition is satisfied, those many instructions are going to be skipped, and if condition is not satisfied, then it will go to next instruction. लेकिन मैं आपको फिर से वो डिटेल में इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ, अभी आपको वो नहीं समझना है. आपको खाली समझना है कि जो एड्रेसिंग जो है, दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ, हम उतना मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसको बता रहे हैं कि चलो भाई इतने एड्रेसेस आप स्किप करो, वो छोड़कर आप आगे चले जाओ, राइट. एंड द लास्ट वन इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग. इम्प्लाइड एड्रेसिंग में क्या है,
कोई ऑपरेंड दिया हुआ नहीं है. ओके, इम्प्लॉइड एड्रेसिंग में कोई ऑपरेंड दिया हुआ नहीं है. बाय डिफॉल्ट it will work on carry flag. So carry flag is automatically clear. So this is how the addressing modes are all about. With this we have finished chapter number 1. Okay, so in this chapter what we did, we started with microcomputer, then we discussed what is microprocessor, then we have discussed the evolution of microprocessor, then we were focusing on the hardware part. Hardware part means what is pinout diagram, what are different pins and functionality of the pin, the internal architecture we have discussed, that was very important. Okay, we have discussed how the data is being flown from one place to another during execution, how the bus, I mean, what is the meaning of the fetching of data, fetching of instruction, how the execution is happening, and then we discuss addressing mode. So this is what it was there in chapter number 1. Now we are going to close this, and then we'll be going for chapter number 2. Chapter number 2 will be dealing with set instruction set. So one by one we are going to discuss how the, because this is part of the software part rather, how the data can be provided for the instruction. हमने क्या किया, अभी data हम कैसे provide कर सकते हैं instruction execute करने के लिए, वो हमने यहाँ पर discuss किया. Rest of the thing will be discussed in chapter number 2. And you are going to have many, I'm sure you will be having many questions. Those questions I'm going to take at the end of session 2. Okay, now it's going to be terminated soon, and once it is terminated, you will have to join back at the earliest so that we can start chapter number 2. Okay, so this is how the chapter number 1 was altogether. Okay.